Hello guys, so prelims is delayed by 21 days. So it is my general suggestion to complete the section of optional that is very important both from paper 1 and paper 2, and UPSC Jugadu is here to help with the sociology yet again with another video. So we'll discuss 3 years PYQs for the thinker Durkheim. So let's move forward. So the first question is critically examine how Durkheim and Merton explicate anomie. So anomie is a state where Durkheim describes it as an abnormal form of division of labor, and Robert Merton says it is discrepancy between the culturally defined goals and structural means. So this is the introduction. Here I am writing in a very short form, and you can elaborate it according to you. So this is 300 words question, 20 mark question, which was asked in 2022. So now this is a topic where we don't have more points, but then we have to make points from the theory that we already know. I think recently UPSC has been asking applied questions more than the direct questions. Even in the case of thinkers, rest all topics are always applied. If you see the papers for last 5 years, I think you should be prepared with that last 5 years questions, so that you don't feel surprised when the paper is in your hands. And prepare a good introduction and prepare a good conclusion, which is common to all the questions almost, so that you don't have to brainstorm when you go into the exam. एंड एक और सजेशन है मेरी तरफ से कि कोई भी आंसर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक कॉमन पॉइंट रख लीजिए हर एक टॉपिक के लिए, तो कोई भी क्वेश्चंस उसमें से आएगा, सो दैट यू कैन राइट द कॉमन टॉपिक्स. जैसे कोई भी थ्योरी है दैट इज़ वेरी कांस्टेंट. अगर मैं ब्यूरोक्रेसी पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई नो कि मैक्स वेबर का डिस्क्रिप्शन आएगा. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योर questions, and then you can also be prepared with introduction and conclusion, so you don't have to brainstorm during the exam, and keep on repeating those 5 years questions, so that आपका एक रिविजन हो जाएगा. एंड सोशोलॉजी पर से इज़ नॉट अ वाइड सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी कन्फाइंड, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा रेंज में नहीं पूछे जाते हैं. इफ़ यू सी कि फेमिनिज्म पे क्वेश्चन है तो इसके 2-3 टाइप ही है, अगर एक और एंगल भी डाल दिया तो पॉइंट्स तो कॉमन ही रहेंगे. So accordingly you can prepare, and if you prepare the last 5 years questions, I'm sure that you'll be through and you can easily score around 270-300 marks in the paper, given that you substantiate it with good examples and your creativity like diagrams, flow charts, etc. नहीं भी होगा but description is apt, you are through. So let's move forward with the question. So यहाँ पे मैंने एक heading दिया है points and then differentiation. So their work is lay suicide for Durkheim and social structure and anomie. Then the second is definition. So refer the introduction for the same. So you can elaborate the introduction, and then you can write really short forms in the definition here. I have not elaborated the question so that it saves your time. Now causes. So Durkheim में आएगा lack of regulation and pathological division of labor. Again you may elaborate the points. And यहाँ पे है discrepancies between goals means leading to divergence, not following institutionalized goals or means as we have seen earlier. अब recovery है कैसे होगा? Durkheim is a functionalist, तो वो कहेगा कि new values and institutions बनेंगे. So there was SEBI which was formed after Harshad Mehta scam. This is a very creative example, so you can substantiate your answers with these kind of examples. जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया है या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं. देयर आर सो मैनी पार्टीज ऑल्सो कमिंग अप कि ऑपोजिशन पार्टी लाए हम लोग की, यू नो द रूलिंग पार्टी रिमेन्स इन अ कंट्रोल. So these kind of institutions like democracy is also one of them. So in Merton you may write anomie is present as a strain in the society. So Merton believe करते हैं कि anomie हमेशा ही रहेगा
एंड वो एज अ स्ट्रेन रहेगा. एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन ड्रीम, आई थिंक इट इज़ गिवन इन द बुक ऑफ नितिन सांगवान, और मेरे ख्याल से इनफ है अगर आप उतना ही रेफ़र करेंगे तो. जस्ट स्टिक टू वन मटीरियल and you may value add certain things, and as and when you write questions, so you would understand what you have to be present with before the exam. So nature, तो डरखाइम बोलता है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज़ पैथोलॉजिकल फैक्ट, और मॉर्टन कहते हैं कि कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इट इज़ अ डिवियंस. सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. पॉजिटिव के क्या फॉर्म्स है? इनोवेशन एंड रेवोल्यूशन. सो वो 5 पैटर्न है ना, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दो, एंड देन यू मे इलैबोरेट अकॉर्डिंगली. नाउ सोल्यूशन क्या है? प्रोफेशन एसोसिएशन, code of ethics, moral regulation, professional association, like new institutions are formed and everything, and 5 patterns of Merton, some strains will always remain. तो इनका ये कहना है कि अगर कुछ भी होता है डेविएशन या अनोमी, तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन. और ये डिविएंस हमेशा रहेगा बिकॉज सोसाइटीज़ उनके तरीके से नॉट फंक्शनल, वो फंक्शनलिज्म में नहीं बिलीव करते. So what is time period? This is temporary when the society gets stable, because functional का क्या approach है कि society is going to remain functional. Functional means it is going to remain stable, and we may say that functionalists were very peaceful people. So they did not believe कि society में कोई गड़बड़ भी हो सकती है, या अगर होगी भी तो it will come to a state where it is totally stable and away from disturbances. And now in Merton we may say that structural strain is always present, तो हमेशा रहेगा, तो that is permanent. So you may conclude like a person may respond to the same type of social imperatives differently. Anomic behavior is therefore subjective. Now highlight the difference between totemism and animism, and also similarities. Now this is a question which is totally on an applied bent. आपको एक छोटा सा भी नॉलेज होगा तो यू में एलैबोरेट द पॉइंट्स. इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी का यूज़ है, ना कि बुकिश नॉलेज का. सो एमाइल डर्कहाइम इन हिज एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ मेंशंस टोटेमिज्म, दैट इज द सीक्रेट थिंग्स अवे फ्रॉम प्रोफेन वेयर टोटेम्स आर वर्शिप्ड. ना एडवर्ड टेलर, अगर इनका बुक याद आ रहा है तो आप लिख दीजिए, मुझे याद नहीं था. एक्सप्लेन्स एनिमिज्म एज अ बिलीव इन एनिमा और स्पिरिट्स. डिफरेंसेस क्या है? बेसिस वर्शिप ऑफ सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स, of course we've seen. Now here soul and spirits, for example Pritra Shraddh. Then representation, collective identity of clan or a group. So you know what is totem. If you don't know, you may read Nitin Sagban. It is given very they have described it really well. And इसमें क्या आएगा? For example Zambezi के ट्राइब्स हैं, तो वो 6 एलिमेंट्स जो है नेचर के, एयर, वाटर, अर्थ एक्सेट्रा, उसको टोटेम्स मानते हैं. तो अगर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है तो लिख सकते हैं. जैसे ओम इन हिंदुइज्म ऑल्सो इज़ अ टोटेम, वी में से कि इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ हिंदू, एंड अकॉर्डिंगली लाइक इफ यू हैव गॉटन एन एग्जांपल फ्रॉम एन एबोरिजिनल, दैट वुड बी रियली. Representation here is, it is an idea of worship of anima as a collective identity. So it may or may not be tangible. So for example worship of Vishwakarma, because he was there are stories, there are myths, and so they were souls basically who have passed to the other realm. Or you may say कि worship of even living objects like trees, animals, etc., like living things and living beings also. Now let's see. So symbols is tangible objects which are considered sacred. Now intangible is spirits, so they don't have any form. Now time क्या है? यहाँ पे aboriginals माने गए through Durkheim, and यहाँ पे ancient societies as per Taylor. And practices क्या है? Dance, songs, which takes them to the state of exaltation and effervescence, जो कि of course I'm using the vocabulary of Nitin Sagwan.
worship, appeasement, discourses, communication, tantra, etc. in case of animism. Similarities, so they both are considered primitive, and of course modern religions have evolved from the primitive religions. So there is an element of reverence. Then third point is cultural narratives and stories and practices related to the same. फोर्थ इज कलेक्टिव कंसाइंस है, वहाँ पे सोशल बॉन्ड्स बिल्ड करता है. देयर इज सोलिडारिटी. ऑफ कोर्स फंक्शनलिज्म बिलीव करते सोलिडारिटी में. दिस पॉइंट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. देन कोई एक्सटेसी के स्टेट में चला जाता है तो दैट इज़ यू फील गुड, यू फील बिलीव बियॉन्ड योर लॉजिक, and you feel that there is some guiding force which is keeping you in a society. तो ये एक पॉइंट है. देन देर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन पावर. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी अपने वर्शिप के प्लेसेस पे गए तो हाउ डू यू फील वेरी एनर्जाइज्ड. सो देर इज़ कनेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट, नेचर एंड ह्यूमन्स. फॉर एग्जाम्पल, गंगा रिवर इज़ कंसिडर्ड एज गॉडेस गंगा, तो गंगा मैया कहते हैं हम. सेवेंथ पॉइंट इज सीक्रेट सिम्बलिज्म इज प्रेजेंट इन बोथ द cases. So both these practices gave basic understanding of how modern societies' religious practices might have evolved, also establishing the existence of belief in supernatural beyond what is scientific or logical. So this is a very generic conclusion, and you can give this conclusion to more than one answers, I would say. Third question is, explain whether Durkheim's division of labor is relevant in the present day context. Okay, so what is division of labor according to Durkheim? So it is splitting of activities in the number of small activities which are interconnected and undertaken by different people. तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जब मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम इवॉल्व होते हैं तो देयर आर सो मैनी पीपल, ऑफ कोर्स, तो उसके साथ डायनेमिक डेंसिटी बढ़ जाती है. और मैकेनिकल जो था डेंसिटी, उससे ऑर्गेनिक मैकेनिकल सोलिडारिटी से हम ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की तरफ मूव करते हैं. तो पहले कैसा होता था प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, देयर वाज वर्क विच वाज कॉमन. फॉर एग्जांपल, डिवीजन ऑफ लेबर जो जेंडर बेस्ड था इन एंशिएंट, की हंटिंग गैदरिंग होता था, या वुमेन वुड टेक केयर ऑफ द नर्चरिंग एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड होम. नाउ द थिंग इज़ कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैकेनिकल सोलिडारिटी, एंड दैट इज़ नंबर ऑफ पीपल और मटीरियल डेंसिटी इंक्रीजेस. अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल, काम भी बढ़ जाएंगे, एंड उसके साथ एक इंटरकनेक्शन भी बढ़ जाएगा लोगों के बीच में. सो कंपटीशन भी बढ़ेगा एज अ रिजल्ट, बिकॉज वी आर ऑल इंटरैक्टिंग एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज वी नो. सो देयर विल बी इंक्रीजिंग इन द कंपटीशन. सो एज वी नो, डार्विन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसके अकॉर्डिंगली people who are left and people who are not efficient enough, so unfit will take a new occupation and specialization. So through this there would be many occupations developing in the modern society, as we see, right from primitive to, there is no rocket science, as we all know in this particular case. So interdependence will increase and division of labor becomes perpetual or inevitable. So let's see. अब क्वेश्चन क्या है? It is a 10 mark question, and इसमें लिखा है relevant in the present day. So I have given a very short description of my theory यहाँ पे, और अब मुझे ऐसा है कि now my brain is starting to work कि मैं और क्या examples दे सकती हूँ. So for this kind of evolution of the society, you may take some historical examples, you may take some economic examples जो आपको normal day to day routine में दिख रहे हैं. For example, global supply chains में, so there are companies which are brands and they outsource cheap labor from Asia and Africa. तो उसका examples आप दे सकते हैं, which is very relevant. Again, interdependence is formed. Then there is division of labor within the family. Of course, this is gender based division of labor you can describe, or you may take the example of modern day societies that we have, how families keep on managing the work, like grandparents look after the grandchildren and women take care of their homes also. So we have divided the work
I'm a feminist though, but we have a gender division of labor present, so you can describe it accordingly. Then there is globalization. Example, India as a service provider to global IT firms. In terms of globalization, आप एक हब स्पोक मॉडल भी जानते होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए. You may read it in the economy section. Like there is a center of थिंग्स. यहाँ पे ये काम आउटसोर्स हो गया, ये हो गया आउटसोर्स, ये हो गया आउटसोर्स, एवरीथिंग हैज़ बीन आउटसोर्स्ड. फिर ये सब जो आउटसोर्स होके मिलता है, देन देर इज़ एन असेंबली जहाँ पे वो असेंबल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी सी एप्पल, तो एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, और हो सकता है कि अलग अलग जगह बनते हों. दे कलेक्ट देयर आइटम्स एंड देन assemble it at a place, and then again whatever marketing management या जो भी final processes होते हैं. Okay, so again relevant in the present day society, solidarity and social order. Of course functionalists चाहेंगे कि society stable हो, तो जो norms and values उसके around create हुए हैं, तो आई थिंक डिविजन ऑफ लेबर उनका मानना है कि ये क्रिएट करता है कि सोसाइटी स्टेबल रहे, इसलिए इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हुआ है जिससे पीसफुल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है, सोशल ऑर्डर है वहाँ पे. नाउ फिफ्थ, explains emergence of new social structures. For example, we give the SEBI example in the previous answer. As the society progresses, for example, there are institutions around law and order, legislation, markets, etc. Now another point is maximization of output and assembly, sorry, efficiency. So assembly line is one of the examples of this. You may write the example where it originated from. For example, Ford. So assembly line is a concept which originated from the company Ford, and after that there have been so many MNCs that have been following the concept of assembly line. So the concept here revolves around efficiency. For example, एक company है जो बैग बनाते हैं, and there are people who stitch buttons on the bag. So वो लोग सिर्फ बटन से स्टिच करेंगे और वही एक सिंगल पॉइंट पे स्टिच करेंगे फॉर ईच एंड एवरी बैग, तो उन्हें प्रैक्टिस हो जाएगा. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन. नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, या जो भी कह लो, एक्ट्स कह लो, या फिर फॉर एग्जांपल वी मे से दैट समटाइम्स there is a new value in the society. For example, divorce is welcomed. So according to functionalists, if divorce is welcome, is a new value in the society, this will become a norm in the society gradually as the society evolves. So for example, this concept has begun today. So after 2 years we see that divorce is very welcome in the society. So divorce is not looked down upon even after 2 years. So this is the concept, that is formation of new values and norms. Now we'll see criticism. So he ignored conflict. Of course conflict आप हर आंसर में यूज़ कर सकते हैं for criticism. Marx is a universal thinker. He is relevant everywhere in every dimension of the society because paradox हमेशा ही रहता है. Focused on individual autonomy but ignored alienation and dissatisfaction. So उनका theory usually top down ही था, वो functionalism में ही believe करते थे, और उन्होंने dissatisfaction in terms of an individual was ignored. Ignores the factors like economic opportunities, religion, etc. and focuses only on the functional aspect. So it becomes a bit irrational because he's avoiding the contention that could be in the society. Again, जैसे मर्टन कहते हैं कि some kind of strain is always present in the society, so you can mention Merton here कि अगर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा तो एक डिवियंस नहीं होगा, डिवियंस नहीं होगा तो इनोवेशन रेवोल्यूशन कैसे होगा. So you may mention those points, and there are again pathological facts which are present in the society.
So we'll give a general conclusion. His studies have been relevant in the study of evolution, specialization and interaction of politics, justice, morality, etc. in the society. So here we conclude Durkheim, and I hope we'll be coming more regularly with the videos, and I hope you prepare sociology in this 21-day window that you have got. Consider yourself lucky enough to, I think paper 1 or important topics of the subject could be completed in this time period. So good luck, and goodbye.